कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। थैंक यू वेरी मच गाइस। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है ना बहुत ही अलग और क्रेजी होने वाला है। क्यों बोले तो मैं अभी आज मेरा एक परफॉर्मेंस है पोएट्री का, तो आप लोग पूरा एंड तक देखो वीडियो, और जब तक जाकर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दो। तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग, क्योंकि हम लोग आ चुके हैं हमारे लोकेशन पे आज के मोटो गैरेज कैफ़े न्यू सर। अभी अंदर जा रहा हूँ मोटो गैरेज कैफ़े के, आप लोग देखो। బయోస్ కూడా ఉంటాయి. వన్ బయో అని తెలుసా, వన్ పేరేమో లిప్ లాకర్ లింగము, వన్ బయో వచ్చేసి స్టే సింగిల్ బీ హ్యాపీ. మళ్ళీ వన్ ఫాలోయింగ్ లిస్ట్ చూస్తే మొత్తం పూరీలే. तो गाइस शुरू हो चुका है డీప్గా పోతే ఇంకా జర డీప్గా పోతే చక్కగాళ్ళు ఆడ దాకుంటారు. వాడు వచ్చి వాడు ఏం పెట్టిండో స్టే సింగిల్ బీ హ్యాపీ అంట. మెసేజ్ కూడా అట్లే ఉంటాయి. कार्तिक का ఇంకోటి स्टैंड अप कॉमेडी। నేను ఏదో ఒక నిమిషం బయో ఒకటి యూనిక్ బయో చూసిన यहाँ पर है मानी। నేను మర్చిపోయినప్పుడల్లా మీరు సపోర్ట్ కొడితే ఇంకా నాకు ఎనర్జీ వస్తుంది. మా సీనియర్ ఒక అక్క ఉంటుండే, ఆమె ఏం పెట్టింది తెలుసా, బోర్న్ టు బికమ్ ఐఏఎస్. అక్కని తొందర పోయి అక్క 7 ఎంత అక్క అంటే 21 అని చెప్తుంది. 21 అని చెప్పి మళ్ళీ క్యాల్కులేటర్ ఓపెన్ చేసి చూస్తుంది. అంత కాన్ఫిడెన్స్ అక్క మీద అక్కకు. అక్క ఐఏఎస్ కానికనే ఉంటుందంట. అక్క భయోనేమో అట్లా ఉంది. ఇంకోడు మా ఫ్రెండ్ ఉంటాడు, వాడి పేరు యాదగిరి. వాడే పెట్టింది బోర్న్ టు బికమ్ రిచ్. వాడు పాండప కాడికి పోయినప్పుడల్లా నాకు 13 రూపాయలకు సిగరెట్ ఫోన్ చేస్తాడు. బోర్న్ టు బికమ్ రిచ్ 15 రూపాయలు పడతాడు విత్ సెంటర్ ఫ్రెష్. వాడు బోర్న్ టు బికమ్ రిచ్ అంట. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇట్లా ఉంటాయి. ఇంకోటి మోస్ట్ ఇరిటేటింగ్ థింగ్ ఏముంటుంది ఇన్స్టాగ్రామ్లో మీకు తెలుసు. మీకు అబ్బాయి ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇది ఒక్కటి లేకుంటే బాగుంటుండే అని ఏదైనా అనిపించిందా? అందరూ వాడుతున్నాం అని చెప్పారు కదా, ఎవరు बर्थडे विशेष नाकेमनिपिंचिंది తెలుసా? तो गाइस एक बात बोलना भूल गया आप लोगों को कि यहाँ पर अगर आप लोगों के अंदर भी कोई अगर टैलेंट है, जैसा कि सिंगिंग, पोएट्री, स्टैंड अप कॉमेडी और या फिर स्टोरी टेलिंग, अगर आप लोगों के अंदर कुछ टैलेंट है तो डेफिनेटली आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं इसकी फुल इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। एक एक्सप्लोर यू बोल के इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए 250 to 300 चार्ज करते हैं, और एज ए ऑडियंस जाना है आप लोगों को तो 150 रुपये चार्ज रहता है। ये मंथली 1 टाइम और या फिर 2 महीने में एक बार ये कंडक्ट होता है एक्सप्लोर यू बोल के। तो बेहतर है, ये प्लेटफॉर्म अच्छा है अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये था इन्फॉर्मेशन, और अभी मैं अंदर आ चुका हूँ। अभी परफॉर्मेंस अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। मेरी 4th या 5th परफॉर्मेंस है। तो आप लोग क्या करना बोले तो जब तक जाकर पूरा व्लॉग एंड तक देखो तो आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाती। तो टिल दैट के लिए बने हुए रहेंगे हमारे व्लॉग में। సారీ గర్ల్స్, ఐఎమ్ బిజీ విత్ మై డీల్ అంటే వానికి గర్ల్ ఫ్రెండ్ వాడు ఆమె దూరం బిజీ ఉంటాడు. ఏమైంది మేడం అంత సీరియస్ లుక్ ఇస్తారు? ఇట్లాంటివి ఎప్పుడు చూడనట్టున్నారు. అయితే వాని ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఇంతవరకు షార్ట్ వేసుకొని నల్ల లాగు షార్ట్ కూడా అన్నారు ఊర్లో ఉన్నప్పుడు. నా షార్ట్కి ఇంత బొక్కు ఉంటుండే, లోపలికి చిన్న ఎర్రకల్ల డ్రైయర్ కనిపిస్తుండే వాని ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు. ఇప్పుడు ఆ ఏజ్ పిల్లలు అట్లా అయిపోయినారని చెప్తున్నారు. చలో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇదే మన ఇదే సెకండ్ పర్ఫార్మెన్స్ యాక్చువల్గా.
Okay? Cool. Moving on now, we have another Aditya who's going to be performing a comedy set here. So huge round of applause for him. Yeah, so I like movies. बढ़िया रहता है, टाइम पास हो जाता है देख के. It's lot of fun. But some people they love movies. They love movies so much कि कहीं भी मूवी रिव्यू देना शुरू कर देते हैं. So a couple of days back मैं थिएटर गया था. तो वहाँ मूवी शुरू होने के जस्ट 2 मिनट पहले एक बंदा मुझसे बात करना शुरू कर देता है. He's like कि ब्रो ये मूवी बहुत बढ़िया है, इसमें जो डायरेक्टर है इसने ये सोचा है, एक्टर का कैरेक्टर ब्ला ब्ला व्हाटएवर. एंड आई एम लाइक ब्रो पॉपकॉर्न जल्दी से, शो शुरू हो गया प्लीज. एंड या सो यू मीट दैट काइंड ऑफ पीपल. बट I like movies, but the only thing that I don't like about movies is कि they are somewhat unrealistic. It's like अगर आप कोई एक्शन मूवी देख रहे हो, I'm sure we all seen it, कि हीरो है एक, गुंडे हैं 50, and it's like जब हीरो दूर है तो गुंडों के पास गन्स हैं and they're firing at him, मतलब हवा में 1000 गोलियां मारी, एक नहीं लगी. And it's like even women basketball players shoot better than this, and it's like no, just kidding. Like मैं देखता नहीं women's basketball, so it's like it's just a joke. तो या मतलब हीरो इज फार, ठीक है, एंड गुंडे के पास गन है, देयर फायरिंग हवा में रैंडमली, एंड देन जैसे हीरो पास आता है देयर लाइक गन्स गायब, लाठीज आउट. लाइक ओके व्हाट इज दिस मुंबई पुलिस बिहेवियर, लाठीज कहाँ से निकाली रैंडमली. एंड इट्स लाइक चलो ठीक है, आई कैन एक्सेप्ट दैट. एंड देन देयर लाइक कि एक एक करके जाते हैं इसके पास मारने इसको. इट्स लाइक मैं अकेला ही काफ़ी हूँ इसके लिए. एंड लाइक तो यू गाइस मस्ट हैव ऑब्जर्व कि भूत जो हैं वो सिर्फ रात को बाहर आते हैं. एंड आई वाज थिंकिंग ऐसा क्यों होता है, एंड आई फाइनली रियलाइज क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है, तो इट्स लाइक रात में. ठीक है, थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम. Hello, good evening, everyone. Thanks for coming to the open mic, because audience is the main support of the performer. My name is Amin, and I am from Hyderabad. Today I am performing the poetry. This is my third time, where I usually, whenever the Explore You conduct the open mic, no, I usually prepare myself and come. By the way, I can sing a song also, but today I will give the परफॉर्मेंस ऑफ पोएट्री. सबसे मिला ना करो इतनी सादगी के साथ, सबसे मिला ना करो इतनी सादगी के साथ, ये लोग अलग है, ये दौर अलग है. हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था. हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था. जहाँ अपनी किश्ती डूबी वहाँ पानी कम था. मुख्तसर सा गुरूर भी ज़रूरी है ज़िंदगी में जीने के लिए, मुख्तसर सा गुरूर भी ज़रूरी है ज़िंदगी में जीने के लिए. ज़्यादा झुक कर मिलोगे तो लोग पीठ को पायदान बनाए थे. खुदा पर छोड़ा, खुदा पर छोड़ा, कभी दुआओं से घर नहीं बांधा. खुदा पर छोड़ा, कभी दुआओं से घर नहीं बांधा. सफ़र पर निकले तो रास्ते सफ़र नहीं बांधा. कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी, कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी. हमने कभी नोट पर रबर नहीं बांधा. वो उसी से मांगो, उसी से जो दे दे खुशी से. मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहो उसी से जो ना कहे किसी से. वो मैडम अलग समझ रहे हैं, ये अलग ही लेवल की बंदी है. ये ट्रेनिंग चल रहा है ना यहाँ पर. में हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती. दीवार तो मिलती है पर बुनियाद नहीं मिलती, दीवार तो मिलती है पर बुनियाद नहीं मिलती. माँ तो मिलती है, माँ तो मिलती है हर औलाद को बहुत अच्छी, माँ तो मिलती है हर औलाद को बहुत अच्छी, लेकिन हर माँ को अच्छी औलाद नहीं मिलती. अदा मतलब निगाह मतलब, यार मतलब प्यार मतलब. बता मतलब कहाँ जाऊँ, बता मतलब कहाँ जाऊँ, जिधर जाऊँ वहाँ मतलब. अंदर
जिसको देना हो, समंदर जिसको देना हो उसे खतरा नहीं देता, समंदर जिसको देना हो उसे खतरा नहीं देता, खुदा अपने चाहने वाले को कभी दुनिया नहीं देता। और इसी के साथ मैं अभी ये परफॉर्मेंस अपनी ख़त्म करूँगा कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। थैंक यू वेरी मच गाइस। So guys, you can also follow me on Instagram and also subscribe to my YouTube channel. Great. Okay, so poets and shaires. मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने हमारे लिए जो सिंपल इमोशंस होते हैं वो थोड़े खराब से कर दिए। मतलब अगर मैं जाऊँ पूछने की, अगर इफ आई हैव अ बैड डे एट वर्क, आई विल बी लाइक यार आप हैड अ शिटी डे। ये लोग ऐसा करते हैं कि 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए 10 पेज का आंसर लिखते ही जाते हैं, जहाँ चांद तारे दुनिया आसमान जमीन, मतलब everybody is responsible for their bad day, right? तो गाइज मैं अभी मेरा परफॉर्मेंस ख़त्म होगा, अभी दूसरे परफॉर्मेंस के लिए वेट कर रहे हैं, जब तक के लिए ब्रेक है, इसलिए मैं बोला शूट कर लेना बेहतर है। तो फिर कंटिन्यू करते हैं व्लॉग में, पूरा एंड तक देखो व्लॉग। तो अब चलते हैं क्योंकि काफ़ी सीरियस बातें हो गई हैं, तो लेट्स इनवाइट कार्तिक who has invited all of his friends for support. Great. I love such friends. So since childhood I never wanted to do a 9 to 5 job. You know, it's pretty boring. But now I do a 2 to 11 shift. Honestly, because I have to pay my bills and लगता है पैसे लगते हैं भाई. So I do a 2 to 11 and it was tough for getting onto my first job because I never attended college. I am from one of the most famous colleges of Hyderabad, which is Avinash College of Commerce. Evaluation money and it leaked the papers just 10 minutes before my exams. Every exam I gave 10 minutes before I had the question paper, and I think the gene still has those answers written on them. They also, like most regular people, I also work in a 9 to 5 job. So it's been almost, I guess, 1.5 years working in a company. I love my company. That's what my manager told me to say. Yeah, I have one thing for the ladies here. What do you call a man who does not earn money? I think you should not call them. My manager also said me once, don't pretend like you're working all the time, Mohit. Yeah, well, he's not wrong this time. Yeah, I always believe in a lot of things. I believe women look for a guy with a sense of humor and men look for women. That's where the difference is. I also believe that women are one of the best drivers in this world until I started to drive on the road. Yeah, sorry, don't get me wrong. I love women and I'm not gay. So, on men, I thought of writing jokes on men. But what can you write on men? Just look at the life, guys. Yeah, so Hyderabad, I thought 3 things that work in Hyderabad. Chai, biryani and baigan. Yeah, baigan, that is correct. Baigan, I don't know, to all my North Indian friends, if you see some Hyderabadi telling you, baigan pakad mera, don't think he's not talking about the vegetable, I guess. Yeah. So I went home, I told to my mom, I think I have a problem. I told her I keep smiling all the time. Then she showed me my report card and I stopped it. Yeah. Okay, one more. So this was my first corporate job, my first corporate advice I got from my senior. Obviously, you know. They said me, whenever you mess up something, just use the 5 golden words. I am working on it.
My company is worth more than $1 billion and they still don't have a coffee machine. Found a corporate employee. The manager keeps shouting at me all the time. I guess that is the only thing he's good at. Yeah, I thought when I was joining corporate, I thought what will be the worst possible thing that could happen to me. Either you are getting fired out or you will end up becoming the manager. Thanks, that's it for now. You've done very well for the first time. And I work in a company where we have a coffee machine, but it doesn't work. So that's matter. Yes. Okay, so with that, we have come to an end. We keep doing this every month, as you all know. So please keep coming and keep performing and keep attending and just support the artists as well. Hyderabad has been one of the best cities for us because every time people from outside of Hyderabad come here just to see how things are going here, they have so much appreciation and respect that Hyderabad does always well. The people are so nice, the artists are so good, the audience is amazing. The vibe here has always been such good that we have our expectations really high and you guys have not disappointed. So you have been an amazing audience. So let's do a round of applause for yourself. Okay, so please keep following us. We have your numbers, we've added to the group so you'll keep getting the updates on whenever the next show is. You can also follow us on Instagram. Thank you so much. तो इसी के साथ गाइज मैं यहाँ का अपना ओपन माइक का जो व्लॉग था ना एंड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा दिखा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दो। हमारे न्यू सब्सक्राइबर मिले थे आज यहाँ पर। तो कैसा था मेरा परफॉर्मेंस? इट वॉज नाइस। पोइट्री सर ने बहुत सारी लिखी थी। आई वॉज वंडरिंग कि वो याद कैसे रख रहे हैं, बट गुड जॉब, ही डिड अ गुड जॉब। अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। देखिए यहाँ पर आए तो ये मौका है, अपना टैलेंट को क्या है एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड कर रहा हूँ। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।